So let's continue. Just put a minor change in this formula, children. Instead of scrap value, I request everybody to put what is called as estimated scrap value. Because whatsoever is the value coming, rupees 54,000 या 18% कुछ भी children, ये estimated है, it is all estimated children. Okay, ये actual नहीं है. और इस estimate को approve करता है हमारा going concern concept and thereafter AS10. पहले accounting standard 6 चलता था, now it is AS10 as such. समझ में आ गई थी बात? चलिए, let's continue. So everybody understood कि cost of the asset का क्या मतलब है? If we have bought an asset, children, let us say worth rupees 2 lakh, and we spent rupees 8,000 on its transportation. 2,000 rupee इस asset को transport करने पे risk है. तो transportation company को हमने बोला please get this asset insured for us. रास्ते में अगर damage होता है तो insurance company will bear the loss. We are not going to bear the loss. So what is 2 lakh plus 8,000 plus 2,000 children? 2 lakh 10,000. This 210 children is called as the original cost of the asset. तो cost में और purchase price में difference होता है children. This is called as purchase price. But जब आप उसमें necessary installation expenses and transit insurance जोड़ देते हैं, तो you do not get the purchase price. Rather you get what? Cost of the asset. सबको समझ में आ गया cost में और purchase price में क्या difference है? Yes. चलिए, तो please put this example in your copy, children. Purchase price is the price which we pay to the supplier only for the worth of that asset which we are buying, plus installation expenses and all that. ये सब जोड़ के बनता है आपका total cost. I can take another example likewise. चलन मान लीजिए कि आपने 40,000 रुपीस का एक लैपटॉप खरीदा अपने ऑफिस के लिए. 10,000 रुपी आपने पे किया for getting the various softwares operating system installed. 2,000 rupee you paid for extended warranty plan for 5 years coverage, children. So installation of operating system and various softwares, this will also going to give you the benefit for a longer period of time. 40,000 was the purchase price of the laptop, children, plus installation expenses and extended warranty plan. The purchase price of the laptop is 40,000, but the cost would be how much? 52,000. People understood the difference between cost and purchase price? So whenever we calculate depreciation, हमें purchase price से कोई मतलब नहीं है. We are concerned with the cost of the asset. Put these examples quickly in your notebook. चलो. So children, moving ahead with this cost of asset or purchase price of asset में आपको difference समझ में आ गया. Because many a time question will confuse you. Asset bought for rupees 1,90,000, 7,000 paid for installation and 3,000 paid for transportation. तो 2 लाख रुपए से आप start करेंगे calculations अपने, not with 190. So take an example, a photocopy machine is purchased for rupees 50,000 and 5,000 rupees is spent on its installation. So total, children, how much money did we say that's the cost of the asset? 55. Is that understood well? Chaliye. Yes, sir. Net Yes, residual value, children, ये estimated होती है. Today we pre-assume this asset could be sold for 10,000, 20,000, 30,000, anything. Is it necessary whatsoever we are assuming asset utne pe bik jaye? No. It may realize more value. It may realize less value. So this is just an estimated value. ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी. And the life that we estimate is always estimated, children. You are estimating that asset will work for 10 years. Might be possible it gets damaged, it gets exhausted within 8 years only. Might be possible ये 15 years चल जाए, तो कुछ भी हो सकता है. Whatsoever calculations we did for calculating this 54,000 rupee, children, it is all estimated. तो आप बोलेंगे sir, no actual money is moving in or out. How money measurement concept is being applied? Why we are charging depreciation? तो इसके ऊपर एक support है आपके पास, that is going concern concept. The going concern concept says that the life of assets can be estimated in the business, and here our estimation is how many years? 5 years. So people must have written the formula in the previous class. तो आप 5 के आगे years लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा. Okay. फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में लिखा था
5 के आगे years लिख लीजिए तो this would be more understandable. So people understood, children, that earlier we used accounting standard 6 and now we use accounting standard 10. Shall I proceed further? Chaliye. So let's continue with the methods of calculating depreciation. You should be knowing the true thing. Children, there are 12 methods of calculating depreciation. I repeat, there are 12 methods of calculating depreciation. But in class 11th and 12th, we apply only 2 of them. Remaining 10 are taught in CA foundation course. Got it clear? And most applicable यही दो होते हैं basically. And accounting methods are 4 in number. Please multiply 12 into 4 and tell me the answer. 48. CA फाउंडेशन में 48 टाइप्स का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है. 48 में से कोई एक ही आता है. 48 टाइप्स, चिल्ड्रन. So 4 methods of accounting and 12 methods of calculating. So out of this, children, we have first method titled as straight line method, fixed installment method, or original cost. Sir, why the methods are named as so? You will understand them one by one. Please put the heading in your copy, children. Methods of calculating depreciation, followed by capital A, straight line method, fixed installment method, original cost method, followed by this exemplary question. Quickly put this much in your class vocabulary. Yes. So in my example, children, the machine is bought for rupees 3 lakh on 1st April 2016, and it is decided to depreciate the same at 10% per annum. Every year you are supposed to calculate two things. One is the amount of depreciation and other is the amount of book value. Sir, ये book value होता क्या है? Cost minus depreciation is book value. The value which is appearing in your books of accounts is called as book value. एकदम simple है. After depreciation, basically. Okay. So the cost of the asset at the start of April 16 is rupees 3 lakh. What is 10% of 3 lakh, children? 30,000. And 3 lakh minus 30,000 becomes 2 lakh 70,000. This 270, children, is known as a book value. People might say, sir, why you are calculating again 10% of 3 lakhs? Why not you are calculating for 270? Karenge, that's a different method. This method entails the concept that every time calculation will be done on rupees 3 lakh only, children. That's why the method is called as original cost. Every year calculation will be done on rupees original cost 3 lakh only. Is that understood well? Why the method is called as original cost? मैं फिर से repeat कर रहा हूं. 3 lakh rupee is the original cost of the asset. आप हर साल इसी पे 10% calculate करेंगे. That's why the method is called as original cost. Heard this well, children? Again, 10% of 3 lakh is 30,000. The value comes to 240. Again, 10% of 3 lakhs is 30,000. The value lands up to 2 lakh 10,000. Again, 10% of 3 lakhs is 30,000. Value lands up to 180. Again, 10% of 3 lakh is 30,000. The value lands up to 150. So every time 10% is calculated on what value, children? Purchase price rupees 3 lakh. इसीलिए इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. दूसरी चीज एनालाइज करने वाली क्या है? द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन इज 30,000. सेकेंड ईयर अगेन, चिल्ड्रन, इट इज 30,000. थर्ड ईयर अगेन इट इज 30,000. फोर्थ ईयर अगेन इट इज 30,000. एंड फिफ्थ ईयर अगेन इट इज हाउ मच, चिल्ड्रन? 30,000. So value of depreciation remains the same every year, or it keeps on changing? Same. That's why the method is named as, children, fixed installment method, because the amount of depreciation is same. समझ में आ गया? And sir, why it is called as straight line? कुछ बच्चे बोलेंगे, sir, you have drawn straight lines here. Sorry, इसलिए straight line नहीं बोलते. Straight line, children, इसलिए बोलते हैं because when you represent it graphically, 2016-17, the amount of depreciation is 30,000. 17-18, children, it is again 30,000. 18-19, it is again 30,000. 19-20, again it is 30,000. And 20-21, again it is 30,000. So if you join all these points, children, you will form a straight line.
That's why the method is called as straight line method. Understood? The name of this method derived from where, children? Because it is calculated on the original cost every year, so we call it as original cost. Because the amount remains same every year, we call it as fixed installment. And when represented graphically, it forms a straight line. जैसे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में MUX और PX वाली अप्रोच पढ़ी हो, प्राइस कांस्टेंट था, मेरा शर्ट्स वाला एग्जांपल था, 600 रुपी वाज द प्राइस, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन था. समझ गए सब लोग? चिल्ड्रन हर्ड वेल? चलिए, सो प्लीज कॉपी दिस कैलकुलेशन चिल्ड्रन. हैंड इन हैंड मैं आपको एक चीज साथ में और भी बताता जाऊंगा. क्विकली डू दिस फर्स्ट. बी क्विक, बी क्विक. So Yes. everybody understood that we calculated 10% every year of the original cost. So it happens to be 30,000 every year. Yes or no, children? Let us apply a different type of calculation. Children, 30,000 rupee calculated as a percentage of 3 lakhs. Everybody can answer me this. 0 got cancelled. 3 zeros got cancelled. What percentage, children? 10%. Now we'll be calculating 30,000 rupee on 2,70,000. People may ask a question, sir, why you are doing this calculation? थोड़ी देर में पता लग जाएगा. 2 zeros got cancelled, 2 zeros further got cancelled, children. 3 nines are 27 and 3 hundreds are 300. What is 100 upon 9, children? Get me the answer. 100 divided by 9. 11.11. 11.11%. Now, children, 30,000 rupee divided by 2,40,000. I want everybody to note this down. Again, 2 zeros got cancelled. 3 eights are 24 and 3 hundreds are 300. So 100 divided by 8, children. It works out to be what? Children, it works out to be what? 12.5%. Then, children, again 30,000 divided by 2 lakh 10,000 into 100. 0 got cancelled. 3 sevens and 3 hundreds are 100 upon 7, children, is approximately 14.8%. And again, children, 30,000 divided by 1,80,000 whole multiplied by 100. 3 6 are 18 and 3 hundreds are 300. What is 100 divided by 6, children? 16.67. So what I want to prove is this, that in the first year, 30,000 as a percentage of 3 lakh is 10%. But now you are definitely subtracting 30,000. This 30,000, children, is calculated on the original cost. Yes or no? But अगर आप इसकी relative importance देखें कि 30,000 रुपीज आपने लेस जरूर किया, but 270 पे लेस किया, तो actual burden of depreciation देखने में 10% है, but है कितना? 11.11. Next year it is 12.5. Next year it is 14.28, and next year it is 16.67. तो 10% कहने को है, children. Burden year after year goes on increasing. This is the biggest demerit of this method. I repeat, this is the biggest demerit. So why I taught you this? Because आपको क्वेश्चन में, टेक्स्ट में, बुक में ये बात लिखी हुई मिलेगी. Burden in case of original cost method over the subsequent years goes on increasing. और आप बोलेंगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया. आपने तो बताया था every year it remains constant, that is 10%. बट ये 10%, चिल्ड्रन, हमने किस पे कैलकुलेट किया? ओरिजिनल कॉस्ट पे. बट जब आप रिलेटिव बर्डन निकालोगे तो ये 10% नहीं रह जाता, रादर ये बढ़ता रहता है. असेट की वैल्यू गिर रही है और बर्डन बढ़ रहा है. व्हाट्स अ बोगस अप्रोच. दैट्स व्हाई चिल्ड्रन ये मेथड जब बनाया स्टार्टिंग में 100 साल पहले अकाउंटेंट्स ने, तो उनको बाद में बात समझ में आई कि इस मेथड का रियल आउटकम क्या है. दवाई तो बना दी बहुत अच्छी कि प्लांट्स में कीड़े मकोड़े मर जाएंगे. इतना बड़ा गुलाब का फूल उगता था, पेस्टिसाइड डालना स्टार्ट किया, कीड़े मकोड़े मर गए, गुलाब के फूल का साइज इतना बड़ा हो गया.
क्योंकि जो नेचुरल मैन्योर मिलता था कीड़े मकोड़ों से खाद को, वो मिलना भी बंद हो गया। तो लोगों ने सोचा कि कौन जूस कॉर्नर पे खड़े होगा, वेट करेगा, जूस निकलेगा तब हम पिएंगे, बेटर टेक अ पैक्ड जूस। 2 साल बाद पता लगा कि वो जूस नहीं था, दैट वाज एक्चुअली अ प्रिजर्व्ड केमिकल। 10% फ्रूट पल्प होता है, 80% वाटर होता है उसके अंदर, और 10% आपको केमिकल प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मार्केट का जूस इसीलिए महंगा होता है क्योंकि वो प्योर होता है, और ट्रॉपिकाना रियल की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, वो इसीलिए सस्ता होता है कि वो प्रिजर्व्ड वाटर्ड केमिकल कंपोनेंट आपको पिलाया जा रहा है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो कुछ ऐसा यहाँ पे चल रहा है। 10% विजिबल तो है बट एक्चुअली में नहीं है। वो कहते हैं ना, स्टोरी सच्ची लग रही है बट अपनी नहीं लग रही है। तो ये स्टोरी सच्ची है बट ये वाली अपनी है। तो प्लीज पुट दिस कैलकुलेशन चिल्ड्रन। ये इस लाइन को समझने में हेल्प करेगा, विच सेज दैट ओवर द पीरियड ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स burden of depreciation goes on increasing. सुनाई पड़ी बात? quickly do this. चलिए, सो दो बातें याद रखनी है सबको ये चैप्टर पढ़ने के लिए। फर्स्ट, लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग शुड बी नोन टू ऑल, एंड सेकंड, मैथमेटिक्स का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। इसके अलावा आपको कुछ भी आने की जरूरत नहीं है। चिल्ड्रन डन ऑल? चिल्ड्रन डन ऑल? Shall I proceed Yes. further? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. let's proceed further children to the second method of calculating depreciation, and the method is named as डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बट यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों होता है, दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो कहने को सर फिक्स था, रियलिटी में फिक्स्ड था ही नहीं, परसेंटेज तो ईयर आफ्टर ईयर वेंट ऑन गोइंग अप। ओके, एंड ये मेथड इसलिए पॉपुलर है चिल्ड्रन बिकॉज इट इज सिंपल टू कैलकुलेट, बट ये अकाउंटिंग इल्यूजन है। देखने में सिमिलर लग रहा है बट एक्चुअली में सिमिलर हर साल था नहीं। सो चिल्ड्रन 30,000 आपने हर साल माइनस किया। फर्दर हाउ मेनी 30,000 आई कैन सब्ट्रैक्ट कि ये 150 जीरो हो जाए? हाउ मेनी टाइम्स चिल्ड्रन मैं 30,000 माइनस कर दूं, इट बिकम जीरो? 5 टाइम्स, वेरी सिंपल एज दैट। So in this method we can say that the value of asset can become zero. Am I correct to this? Am I correct to this children? एंड चिल्ड्रन एवरी Yes. ईयर, यहाँ पे देखिए गलत चीज लिखी है ना, सेम अमाउंट तो है बट सेम बर्डन नहीं है। सेम बर्डन नहीं है, बर्डन ऑफ डेप्रीसिएशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो आपको टेक्स्ट नजर आएगा हर बुक में लिखा हुआ, द बर्डन ऑफ डेप्रीसिएशन अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब बोलेंगे क्या बकवास है, इट यूज्ड टू रिमेन सेम। इट नेवर यूज्ड टू रिमेन सेम, सिर्फ नजर आता है कि सेम है, एक्चुअली में सेम है नहीं। ओके, एंड चिल्ड्रन जनरली ये मेथड कहां पे यूज होता है? देयर वेयर द लाइफ ऑफ असेट इज कंपैरेटिवली शॉर्ट, आप एक्यूरेटली एस्टिमेट कर सकते हो, और लीज होल्ड प्रेमाइसेस पे ये मेथड चलता है। सर ये लीज होल्ड बिल्डिंग क्या होती है? टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन, वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली located on a land costing 2,000 crores, and this land basically doesn't belong to University of Delhi, rather it belongs to Municipal Corporation of Delhi. ये MCD को belong करता है। MCD says okay, set up a university and pay us some rent. They say we won't be paying rent every year, let us have a 99 years agreement. And children, this agreement is called as lease agreement. Long term rental agreements are called as lease agreements. And this lease agreement says that 99 crore rupees is to be paid by University of Delhi to Municipal Corporation of Delhi to get permission for using the land on which university is being set up. इतनी बात समझ में आ गई? So if children 99 crore rupees is paid for 99 years, 1 year cost is how much? 1 crore. This 1 crore cannot be called as rent, rather this would be called as depreciation of leasehold premises, land or building, whatsoever you say. Because rent by virtue of nature has to be paid regularly, whereas this 99 crore is paid only once, and it will give the benefit for longer time. हर साल 1 crore रुपी हम अज्यूम करेंगे कि क्या है,
depreciation. Take an example in the year 2084 children. ये 99 years का agreement खत्म हो गया. क्या एमसीडी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बोलेगा गेट आउट फ्रॉम हियर? नो नो नो, ये फिर से रिन्यू हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 99 years. ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए थे चिल्ड्रन इन द ईयर 1947, क्या तब ये इंडिया था? तब ये था डोमिनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था. 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, 52 में एनैक्टेड इन फुल, 50 में सम आर्टिकल्स वर एनैक्टेड, 52 में कंप्लीट एनैक्टमेंट हुआ था. 50 ऑनवर्ड चिल्ड्रन हम इस डोमिनियन ऑफ इंडिया को बोलने लग गए यूनियन ऑफ इंडिया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो रिपब्लिक हम तब बने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया. आपने कार परचेज कर ली ऑन लेट अस से 25th of October, but you got the registration number on 28th of October. So you are registered to drive the car from 28, but you are the owner of the car from 25th. Logic understood well? Pakka? So if the road transport authority says your registration is valid for 15 years children, the validity will be counted from 28th October and not from 25th October. Is that understood well? So lease agreement gets renewed basically. समझ में आ गया बच्चों? चलिए कनेक्टिंग